नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। Hey Ram, good morning. Good. How are you? We are doing great, and you? Okay. I think in USA night and in Poland there is day. It's early morning. It's around 6:30. And We are in the mid of the night. I'm very sorry that I am not invited Dr. Nisa madam, and I seen here that Nisa ma'am is here. So good morning, Nisa ma'am. Good morning, Ram. Thank you. Where are you? You are not visible, ma'am. Oh, actually, I just turned off my camera. Okay. Thank you. So I think Dr. Rahul is not here. I think he is here. I just We sent sent one message. कट गया। सॉरी, आओ जल्दी आओ तुम लोग ना, तुम इधर आ जाओ ना सामने, इधर आओ। हाँ, ये वाली इस लाइन में चलिए। हो गया ना? तो डॉक्टर साहब बस 2 मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं। Yeah, sure, man. Take your time. ये वाली चेयर पड़ी है ना, हाँ ये लाइन से। हाँ तो ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सभी की तरफ से आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको 3-4 दिन से मैं बता ही रहा था। तो ये मतलब अभी जो हमारे पहले नंबर पे निशा मैडम है, ये इन्होंने पीएचडी की हुई है और ये इस टाइम यूएसए। मैडम यूएसए में ही हो ना एक्चुअली? आप यूएसए में? अच्छा ओके ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुई ना। तो ये मैडम भी यूएसए से है। इन्होंने जो अपने इस पे इनका काम मतलब लाइफ साइंस पे ही था, और ज़्यादा इनके बारे में मुझे पता नहीं है कि इन्होंने कौन से काम किया है ना इन्होंने। तो ये अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर राकेश कुमार है, ये इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। कम से कम 3-4 साल हमने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में। और CH एक्टिवेशन जो तुम लोगों को मैंने बताया था, CH एक्टिवेशन और केमिस्ट, बहुत अच्छे केमिस्ट है ये। इनको अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे इसी तरह का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये बुक में उठाएंगे। और इवन इनसे सीनियर भी है या जूनियर भी है। हम लोग अगर हम लैब में कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट इनको कॉल करते हैं, ये बोलते हैं इसको ऐसे मिक्स करो, इसमें ये सॉल्वेंट करो, ऐसे वर्कअप करो, हमारा ये सही हो जाएगा। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह की इनकी एक्सपर्टीज है। और ये नीचे डॉक्टर रोहित राणा है, ये भी हिमाचल प्रदेश से है। तो इन्होंने एक्चुअली मैक्रोसाइकिल पे काम किया है। मैक्रोसाइकिल मतलब जो बड़ी एंटीबायोटिक्स ड्रग होती है ना, और जैसे मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, 2000 तक होता है, ठीक है, और उससे भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, तो उसको आइसोलेशन करना और NMR से कैरेक्टराइजेशन करना, ठीक है। और एक इस तरह के जैसे इसेंशियल ऑयल है, उसको मतलब उसके मॉलिक्यूल को इन्होंने चेंज किया है इन भी वो मतलब स्टडी करके उसी चीज़ को। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और फिलहाल ये USA के अंदर है। और ये हमारे डॉक्टर उपाध्याय है, इनका तो बहुत सराहनीय काम है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि पैरासीटामोल जो कि बहुत सारे स्टेप में बन रही थी, जो हम लोग पैरासीटामोल है उसको हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि वो सिंगल स्टेप में 90% तक मिल रही है। और हम API है वो क्या है कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया हब तो है फार्मास्यूटिकल का, लेकिन API हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे पैरासीटामोल हर कोई लेता है। तो एक सिंगल स्टेप में आप अच्छी यील्ड में
पैरासीटामोल मतलब आप इन्होंने एक ऐसा मेथड दिया है। और एक अपने डॉक्टर राहुल है, वो शायद ज्वाइन नहीं कर पाए, थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। तो डॉक्टर उपाध्याय, आप अपनी स्लाइड थोड़ा इनवाइट करूँगा मैं सबसे पहले आपको। Is the slide visible? Yes sir, yes. Shall I start? Okay. Good morning to all of you. My name is Rahul Upadhyay. I am a postdoctoral research associate at Krembil Disk Research Institute, Toronto, Canada. And today my talk was on process development for active pharmaceutical ingredients and API synthesis. First of all, we will discuss about what is the API. The API actually refers to that like a substance which is actually show some biological activity in the human beings or some animal system. All the substance, any kind of chemical moiety that produce any kind of biological activity to the animal system are treated under the active pharmaceutical ingredients. And these active pharmaceutical ingredients are branded with a different name and different by different companies, but the composition and their concentration in all the marketed drug are different, and based on their like nowadays the paracetamol is actually branded like two form like 500 mg and 750 mg. Like one is the aspirin and other is the dolo. And to synthesize these APIs involve several chemical processes which involve careful requirement, careful development, optimization, and product and safe pharmaceuticals parameters. And here we are discuss about this complexity and challenges involved in API synthesis. First of all, I was just taking the example of this sitagliptin, which is anti-diabetic drug to treat diabetes 2. And here in these processes, when we see the synthetic route, this is actually a multi-step process in which reactions are actually proceeded by the first of all this phenylacetic acid derivative are coupled with this maltodextrin acid to give their uh, particular enols. This enol are further reacted with this amine to get this ketoamide derivatives, and further the reductive amination of this amines, this ketones in the presence of this ammonium acetate. This give their respective imine, and this imine actually, and here this two possibilities are there. If we are going to reduce this alkene to our corresponding amine. Sorry to interruption, Dr. Rahul. These slides are not moving. Like it shows stuck on a in a first slide. Slide are not moving. Yeah, we are showing only the first slide. Now it's moving. No. Yes. Yeah. Now it's okay. Yeah, it's fine. Yeah. Okay. This is now. Rahul, maybe you can go for the full screen view. Yeah, actually, this is okay. Not yet. This is not the slideshow mode. Yeah, this is actually in slideshow mode. I think network connection is quite weak here. So maybe you can continue with these slides only. Yeah. Okay.
Whatever I will discuss about these things here in this reactions, when we are going to reduce this imine, there is two possibilities of generation of two type of enantiomer. One is like in above the plane, one is the below the plane. But here, the active component of this drug is the with NH2 at the above the plane. Then here is the we required enantio selective reductions of this imine to their particular amine. And here we use like some rhodium catalyst with some kind of enantiomeric controlled ligands to use for our enantiomeric access, and in which they give their corresponding amine in 95% EE, which is our required amine. Now slides moving or not? Yes. Hello. Okay. The next one is the like to synthesize these drug molecules, we need to optimize the process. Then how can we make these drug in our laboratory as well as at industry level? For these things, we have to optimize few parameters to synthesize drug molecules, like concentration of the molecules in the reaction system, temperature of the system, at which temperature reactant are getting reacted together to get the maximum yield, what is the pressure required during the reactions, any kind of like some time of reactions required oxygen pressures like hydrogen, and some time of nitrogens are there. And after that, phase and surface area is also validate, also playing a important role during the reaction system. Like surface area actually denoted with like with when we are using this catalyst, like some type of heterogeneous catalyst or homogeneous catalysis, then surface area is very much a responsible factor for the reaction conditions. And the most important factor is the solvent system during the reaction. Solvent play a very important role during the chemical transformations, and these parameters actually comes under the like optimization of reaction condition, which resulted good yield of desired product, which improve the product yield, reducing cost and reducing waste. If we are optimizing these things, the quantity of product is drastically improved, which reduces the waste generation and improve yield. And after that, when we are performing these reactions at milligram to gram level in our laboratory system, then we have to transfer this at industrial level, where we are processing these our methodology or process to 2 kg to ton level. Then our optimized parameter may be not working on that level, because at that time maybe they're like kinetic energy, like heat transfer, mass transfer, or pressure generated during at that time maybe uh, make some problems during the reaction. Then we need to optimize our process at kg at ton levels in again in the industrial process. Then this is a tricky task to convert a laboratory setup to at industrial level. And after that, after developing a process for the synthesis of any kind of API, then there is a need of must need, because we are dealing with the drug candidate, which is actually going to be animal system, and very careful about this, what actually impurity they contain. And sometime like we have taking this example like sitagliptin, there is a type of impurities are associated with that, like acid impurity, which is their starting material. Alkenes are also starting materials. And like whatever actually I will discuss about the enantiomer, like the product with NH2 at a dotted line, which is not a required form, that decreases the drug efficiency during the treatment. So we need to identify all these impurities as well as the required enantiomer during the system, and try to make a method to remove these impurities from the system and make the product quite pure. And to check these parameters, some regulatory compliances are required, which is actually made up by this collaboration of chemists, engineers, and quality control professionals. And they ensure the synthesized compound must have higher efficiency, eliminate risk by eliminating all
the impurities from the system, which also eliminate the risk, because sometime when we are dealing with some enantiomeric drug molecule, there is a two possibility. One isomer is active and as well as other molecule is not active. So we have to very careful about these things, which isomer actually required for the treatment, and which enhance like turnover, customer investor confidence, etc. And these things are actually deal with like academy, industry, and some green chemistry parameters to regulate these processes. Now, like in industry, there is just a big, the big challenge is the cost of the material. Whatever we have synthesizing in the system, in the industry, is totally dealing with the cost of that particular molecules. Like we are, I am taking the example of just a simple molecule. This ibuprofen. This is an anti-inflammatory drug. Traditionally, actually this is synthesized by this alkyl benzene by. First of all, this alkyl benzene is acetylated by Friedel-Crafts alkylation reactions, and after that, this condensation with chloroethyl acetate to give their respective epoxide, which are further hydrolysis in acidic media, resulted their corresponding aldehyde, and this aldehyde has further reacted with this hydroxylamine to give their required hydroxylamine derivative, and this hydroxylamine derivative and further treated heated with at some temperature, they give their particular nitrile, and this nitrile actually then acidic hydrolysis give this corresponding carboxylic acid, which is ibuprofen. And all these reactions, when we see the best generation, then first step there is aluminum, acetic acid, and HCl waste are generated, and in both processes HCl are there and ammonia are there. So people are thinking and optimizing the parameters and day-to-day discovery in the system. They lead another route for the synthesizing of this ibuprofen. And here, this is a three-step process in which this is again started with the same derivative, but here they eliminate this aluminum chloride from the system and using HF in the place of this LCl3, and again acetylate at this para position, and after that we have they are going to be reduce this ketone to their corresponding alcohol, and after that their carbonylation to give their ibuprofen in the three step. So in this in this system, when we compare the cost of these two routes, the below routes are quite cheaper and quite more efficient, because there is only generation of best is the acetic acid, which is easily removed from the system at not too much impact on the environment. After that, whenever we have like optimize or make any processes, nowadays there is a big challenge to avoid the environmental factors, whatever actually impacted on the environment by like when we are developing any process, there is a generation of waste, maybe some gases are released during the system, and what we are synthesizing, they directly impact on the environment. And to minimize the impact of these compounds in on the environment, the green chemistry postulated few parameters, which is like 12, they postulated 12 principle, which must be followed when we are designing any process for the synthesizing of this APIs, in which they mostly prefer to synthesize the molecules from sustainable resources, design the process which is less waste generating, utilizing of this greener solvents, avoid the use of organic solvents, because organic solvents are directly disposed in the environment, which is not good. And after that, whatever we are establishing a route or anything performing in the laboratory, there is a important thing comes is the safety of the personnel who is performing all these reactions. So before going to lab, we have to ensure we have to wear lab coats, glass wears, and this and gloves. So the and all the chemicals in the in the laboratories should be placed in the proper place. Like some acids are separated in the acid cabinets, bases are in base cabinets. Never mixed
these are together. Metals are also segregated from the another place, and some of like moisture sensitive and other chemicals should be placed at their proper place and labeled whatever hazardous level is there. So be safe. If we are safe, then we can enjoy the work and do the fruitful work. Oh, thank you. Thank you, Dr. Rahul Upadhyay. Any question? Question है तुम लोगों का? करना है? डॉक्टर साहब, जो आपने ये पैरासीटामोल सिंथेसिस की है, इसमें आपने 8 से 10 स्टेप जो प्रीवियस वर्क दिखाया है, 8 नंबर स्लाइड जो आपने दिखाई थी, कोई बात नहीं, तो उसमें जो आपने मतलब एक मेथड डेवलप किया है जिसमें एक स्टेप किया है कैटलिस्ट लगा के, जो स्टेप बना के पैरासीटामोल, उसकी यील्ड कितनी बताई आपने? यील्ड जो है वो 99 है। अच्छा, 99% यील्ड है। तो जो आपने जो ये रिएक्शन डिजाइन की थी उस टाइम, तो डिजाइन करने में आपको कितना टाइम लगा और आपको ये कैसे आइडिया आया कि हम लोग पैरासीटामोल को इस तरह से सिंथेसाइज करें? ये पैरासीटामोल पे आइडिया कैसे आया? Yeah, actually, we are actually working on this some heterogeneous catalyst, which is doing some reduction purposes. So we are starting our work to reduce this nitro to amine. So we are thought at that time this paracetamol also have this amine amine moiety in their structure, so that we can perform these reactions, and we have eliminated two major things from this paracetamol synthesis. First of one is that we are avoiding the use of homogeneous catalysis, and as well as we have also avoid the use of this acetic anhydride, which is a controlled substance. As we know, this acetic anhydride is directly used for the synthesis of this heroin from cocaine. So that we are avoided these two parameters from that systems, and we directly impose one-step process for the synthesis of this paracetamol from paranitrophenols. डॉक्टर साहब, हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग शायद इंडिया में पैरासीटामोल बनाने का कोई प्लांट है? Yeah, the lot of plants are there, and also like the people still getting the funds for developing process for synthesis of paracetamol. Yeah. Recently, a few funds are generated at IIT Roper for the synthesizing this paracetamol, because we are still in a process of patenting our roots. So hope maybe we can. आने वाले टाइम में ये बच्चे जैसे पैरासीटामोल के अलावा कौन से मॉलिक्यूल पे काम कर सकते हैं जिससे फ्यूचर हम लोगों का ब्राइट हो? But nowadays, nowadays like two type of drug are very very much marketed. Like first of all, this generic drugs, because in India there is a problem to develop any drugs, so that Yes. we can focus on developing this APIs which is already exist in India, so that we can start like antiviral. Nowadays, antiviral drugs are too much popular, and most important things is a anti-diabetic drug, which is a huge market in near future. Like as I discussed, sitagliptin is a diabetic 2 drug, so they can start working on synthesizing that type of molecule. ओके डॉक्टर साहब, 2-3 क्वेश्चन और लेंगे बस 2 मिनट के लिए। अच्छा, जो आपकी यहाँ की इंडिया की लाइफ और कनाडा की लाइफ है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। बेटर इंडिया की है या कनाडा की है? Yeah, life is quite better when we are dealing with just like a PhD in India. There is like a hectic schedule during that like there is quite time managing systems, but here everything is restricted towards time. If we are keen to leave the lab at 5:30, so we should leave the lab at 5:30. Door are closed at 5:30. Not in India, like door are open at 12 o'clock.
So these are the differences. That's why like people are enjoying work here, so that they are more fruitful than India. मतलब हम ये सोच सकते हैं कि जो इतने हमारे फार्मासिस्ट बैठे हैं इनका फ्यूचर अगर ये चाहे कनाडा में तो इनके लिए बेटर होगा कि हम Yeah, like चाह pharmacists actually they are most desirable candidate because they know chemistry as well as biology. We are core chemist. I know only the chemistry, but the pharmacists know both the systems, so that they are very fruitful to design any drugged molecules because they know how they work and where they work. We don't know. ओके ओके तो वहाँ पे काफी इंडियन रहते होंगे फार्मासिस्ट इस तरह की हमारी केमिस्ट की कम्युनिटी होगी बाकी तो बहुत Yeah, सारे लोग yeah. Actually, there is any type of research group. They contained all the diversity of the people. Like chemists are also there, biochemists are also there, pharmacists are also there. Not in like we are in India. There is only chemist are there in a group. Here they are working in the collaboration. ओके Yeah. ठीक है थैंक यू डॉक्टर साहब आपने Okay. Thank you. टाइम दिया थैंक यू Yeah. Thank you for the invitation. ठीक है Okay. अब मैं रोहित राणा सर को इनवाइट करना चाहूँगा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में तो सर आप इनवाइटेड हो आप अपना थोड़ा बच्चों को बताइए फिर हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे एक मिनट स्पीकर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्या यहाँ से ही नहीं है क्या सर होना हाँ डॉक्टर साहब चलिए आप Shall I start? Yes, yes, yes. Okay. Yeah, it's visible. Lights are visible, sir. You can continue. Yes, Okay. sir, visible. Okay, I will start. So, firstly, good morning to all. Today I am here to present some work or literature on the importance of synthetic chemistry in pharmaceutical industries. As you know, the words that is synthetic chemistry. So synthetic chemistry basically a bridge between this organic chemistry, inorganic chemistry, material chemistry, as well as biological sciences. So today I am here to discuss some importance of this bridge between chemistry and biology and its importance in different pharmaceutical industries. As we know that if we are talking about the worldwide statistics of this pharmaceutical industry, so we can say that the overall revenue of pharmaceutical industry comes out to be around 1.5 trillion US dollar, which is equal to which is equal to half of the GDP of India. Like the GDP of India is around 3.2 trillion dollar, and the overall total worldwide revenue of pharmaceutical industry is around 1.5 trillion dollar. So if we are talking about the total revenue, Indian revenue of pharmaceutical industry, we can say that it's around 50 billion dollar in 2022, and it reaches up to 130 billion dollar by 2030. So it is a very important industry. So we are like chemists and pharmacists are very are highly contributing in this field. So firstly, I started with synthetic chemistry. So in synthetic, before discussing the synthetic chemistry, I will discuss how the innovations is occurred during last 50 years, and what is the future of innovation in the drug discovery next 50 years. If we are talking about in last 50 years, we have utilized
our traditional synthetic techniques, like which are discovered by different scientists in the 19th century or in the 19th century. So we are utilizing that existing synthetic method to synthesize drug. If we are talking about the today's scenario, that a large number of pharmaceutical industry work on the utilization of some biocatalysts, editing, conjugates, as well as high throughput screening of and then direct evolution of the drug molecule or synthesized molecule to obtain a lead, and then optimizing the lead to deliver a drug candidate. But if we are talking about the future of drug discovery, so by next molecular editing as well as machine learning technology for making innovation in the drug discovery. So we are here as a chemist or as a pharmacist play a crucial role in the development and production of pharmaceutical drug candidates, and there are some key aspects which we are we are or we may be contributing for the synthesis of drug, like drug discovery and development, followed by process development and optimization. Then there is structure of synthesis of drug intermediate experience, followed by their structure activity relation studies, and finally by protecting the intellectual property of the synthesized drug molecule. So firstly, I will discussing an example, or like this we are synthesizing antiviral molecule, that is letonobir. So in the final step of this molecule, we are going to some asymmetric azomical reaction to synthesize our desired molecule. So we can utilize different type of catalyst to obtain our desired product in different yield. So this all the optimization is done by a chemist or a pharmacist to synthesize our desired molecule, so that we can utilize or develop different methods to synthesize our molecule depending upon the varying yield, as well as, like, in some cases we obtain our desired product in high yield, but in some cases we obtain our product in low yield, but the enantiomeric excess of our desired product is very high in another method. So all these things are done by a chemist or a synthetic chemist or pharmacist. So there are some different methods for the synthesis of different type of drugs, which we are utilizing some chemistry techniques to synthesize our desired molecule, like the synthesis of this bepnavir, which is also an antiviral drug used for the treatment of this HCV, which is used as a HCV protease inhibitor. So in this step, there is a linear molecule containing two terminal alkyne. So we are using some lithium catalyst, like a Grams catalyst, to make a cyclic structure, followed by its reduction and following some another reactions to synthesize our desired molecule. So all these syntheses, as well as optimization reaction condition, is done by a synthetic chemist. So by using synthetic techniques, synthetic chemists utilize to synthesize different type of drug molecule. So it is the foundation of drug discovery and development in the pharmaceutical industry. So these synthetic chemists create new compounds, as well as existing active ingredient like APIs, and optimize existing molecule to improve their drug efficacy, safety, as well as stability. So firstly, I will discuss that what is the drug discovery. So if we are talking about journal flowchart of drug discovery, so in traditional techniques, we are firstly synthesizing some library of compounds, then done some primary assay, some high throughput assay, as well as some in vitro assay to synthesize to obtain its activity. If we got some good activity regarding our desired target, then if we obtain a good results, then we subject it for some secondary assay, some counter skin viability, toxicity, and some metabolic assay. If it show some good result, we can directly target this molecule as a clinical candidate. If during this first essay we obtain some good result, but that are not up to the mark, then we go to the we can fix that molecule, the best candidate, as a lead compound,
and done its structure activity relation studies to obtain the best candidate. For this we can design its on like utilizing some computational techniques like docking and some interaction with with the target protein using this bioinformatics techniques, and then designing another molecules based upon our lead compound. Then its chemical synthesis in the laboratory and following the same path, like then done its primary assay. If this one was a good candidate, then like so secondary assay, then clinical candidate. So this is a general flow chart for the drug discovery to obtain a clinical candidate. But in general, the overall drug development include the 5 different parameter. Firstly, started with drug discovery and development, which is the which is shown in this flow chart, and second is the preclinical research, followed by clinical development. Then it is subject to some regulatory reviews, like if we are talking about worldwide or FDA. If FDA in India, it is FSSAI. In Europe, it's a European Medical Agency, and then it's subjected to drug molecules is commercialized, and what also there is a post market monitoring which is also occurred in the overall process of drug development. So in this overall process, synthetic chemist is essential, and this is synthetic chemist as well as medicinal chemist synthesize and modify the molecule to create a potential drug candidate. And during whole the process, they have done a lot of optimization, like structure activity relation studies, synthetic some optimization to increase the potency, selectivity, and pharmacokinetic as well as pharmacodynamic property of the drug candidate. So in this context, first we started with the lead optimization. Like in last slide, we have shown that last slide in the flow chart, we should be obtain a lead compound. What when we have a lead compound, how we optimize this lead to a drug candidate. So in this optimization of this lead lead optimization technique, so we have done different type of replacement or substitution based upon our literature as well as based on the structure. Like we can use this biosteric replacement, like we can replace a small molecule with another equivalent small molecule, and then we can done some scaffold hopping, like we can change a central core of a molecule, and the rest structure is as it is. So we can synthesize different library of different compounds. Also, we can do some analog design from the lead optimization, and there are some the computer aided techniques, like we can do some docking studies for the desired compounds with our target to obtain a good drug molecule starting from lead compound. But there are some another this drug discovery technique, like this structure based drug development, then ligand based drug development. Then there are some another fragment based drug development techniques which are also utilized to use lead optimization as a primary compound and to find out the best candidate to target a specific disease. Using this optimization technique, we can obtain a good compound. So if we are talking about a general scheme for optimizing this lead compound to a drug candidate, so firstly we design based upon like literature or some computer aided docking studies. We obtain a primary lead compound, then it's synthesized, then synthesis of a library of similar compounds having different substitution or different structure, different scaffolds. Then the same flowchart is done like in vitro characterization. It's a pharmacophysical pharmacokinetic study of its different pharmacokinetics, pharmacodynamics properties. Then it's a structure activity relation analysis. If we got a good structure, like a good scaffolds, we recycle the process, like this R&D for drug design, to develop a drug. It takes multiple cycles, starting from a lead, then we obtain a new lead, then
obtain a new need, then finally which leads to a drug candidate. So by using these techniques, we have done different type of structural modification, functional substitution, then stereochemical control, which finally leads to a good drug candidate having good efficacy and safety profile. So in this context, we are talking of after that when we have lead optimization, which leads to a drug candidate. The next is the this process development. Like if we are talking about a journal chemistry reaction, we started with a reaction in a reactor or in a around water flask on some milligram or some gram scale, grams on some gram scale. Then after reaction we done some workup, isolation and purification. So in right now this is the general technique, but right now there are some robotic platform are also available to synthesize some drug. Like there are some example of drug in which we use some molecular robotic platform to synthesize our desired molecules or desired drug candidates. So in if we are talking about this process development, so it deals with the work for optimizing the synthetic process from small scale to large scale, and by using this by utilizing different type of catalysis techniques, different type of coupling reactions, and from small scale to large scale. For this during this process development techniques, we are mainly the main focus is to decrease the cost of synthesis and reduce the side products as well as the reduce waste. So in this process development technique, the main process development is for API synthesis. So in the API synthesis, like we are started from the target molecule, then lead optimization, then preclinical data, then after that clinical data, then its commercialization. So in the laboratory, we synthesize compound APIs in milligram scale. Then after that, we are working on process development from like mgs to some 100 grams of final compound. Then again it's optimization or process development from 100 grams to 1 kg scale. Then then we done the reaction in the pilot scale, like in a pilot plant facility from 1 kg to around 100 kgs. Then finally in some industries which is manufacturing these drug candidate or API in like more than 100 kg, like the frequency of synthesis of these drug molecule in the pharmaceutical industry is monitored like per kg, number of kgs of these drug molecules synthesized per hour. If we are synthetic chemists play an important role in API synthesis, and the chemists design optimize the synthetic route for the manufacturing of API or from lab scale to then to the commercial scale. And during this whole process, they use different type of reactions and they optimize the reaction on the every step. Like there is a synthetic strategy for synthesis of drug molecule. They follows the 4 step, 5 steps. So they have to optimize all the steps from mg scale to kg scale. So there are some after synthesizing the APIs, there is the another department which is a quality control department which contribute. So in this department, the synthetic chemist as a pharmacist contribute towards the quality assessment of the synthesized pharmaceutical candidate. So for the quality control, these chemists develop different analytical techniques such as chromatography. Like for purification, they have utilized some column, starting from some column chromatography, then flash chromatography, and some liquid chromatography. Then they have done then this synthesized compound is subjected to different chromatographic techniques, like they subjected to different spectroscopy techniques like NMR to know the structure of synthesized compound. Then subjected to some HPLC to ensure the percentage of synthesized compound in the specific sample. Then identify, then also to define its potency in a drug substance. So these this whole process, like if we are synthesizing a single molecule, like we take an example of
drug candidate. So when we synthesize whole the, like in industry, the whole batch is like a batch of 10 kg. We have synthesized that drug. So we have to take small amount of that drug sample in around 50 to 100 mg of that sample, and then firstly subjected to NMR to check the structure of this compound, followed by its mass spectrometry to check what is the exact mass of this compound, followed by its purity using HPLC, UPLC, as well as if this compound is a volatile, we can subject this compound for GCMS. If the purity of the compound is more than 95, 98% or 99%, that is acceptable by some regulatory these agencies. So this whole process is the responsibility of chemists as well as pharmacists. So they can establish some specification or conduct rigorous testing to meet regulatory requirements like FDA requirement or like FSSA requirement or like European Medicine Agency requirement, which is required for that active ingredient. So in this after quality control, we have started from a lead compound and synthesize our drug and check all the quality parameter. So what is the next? So next is the intellectual property, to conserve its intellectual property. So in protecting the intellectual property, we are talking about its patent, the copyrights, then trademarks. So synthetic chemists play an important role in patent protection for different pharmaceutical companies. Like one company, R&D department of one company contributed a lot of time to design a new compound or synthesize a new compound for a new therapeutic target. So that company contribute a lot of money for that molecule. So this patent or this intellectual property protection, so it gives that right to protect the whole method and protect the whole method. Like no other one can utilize that method to synthesize that compound for a limited type of period. Like some patent expire in 20 years, some industries then again they repatent it for some another time, like for 10 years or 20 years. After that, that molecule becomes generic and anyone can synthesize that molecule. But till that time, that company protect that method or that molecule from different companies, different companies to synthesize or utilize that method. So this intellectual property protection encourage innovation and investment in drug development from these different scientific groups or different pharmaceutical industries. So in conclusion, we can say that the continuous improvement in drug development, collaboration with different scientific disciplines to address challenges and refine synthetic strategies. Then discover this synthetic chemist, discover new reactions, green process, innovative methodology to enhance drug synthesis and manufacturing. So and this synthetic chemistry and pharmacist is important part of pharmaceutical industry. And the whole process, in which this synthetic chemist as a pharmacist contribute, started from drug discovery, then lead optimization, process development, API synthesis, then quality control, followed by this patent protection. So these synthetic chemists contribute in every phase of the development of the drug in pharmaceutical industry. So by harvesting the power of synthetic chemistry, pharmaceutical companies can develop safe, effective, and affordable medicine to improve human health. Yeah, thank you. थैंक यू डॉक्टर रोहित रोना। हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। क्वेश्चन है एक इससे जो इन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो ड्रग की एप्लीकेशन बताई फार्मेसी से कोई क्वेश्चन? थैंक यू डॉक्टर साहब। ये बी फॉर्म के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के, कुछ तो मतलब लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं।
मेडिकेम इनके सिलेबस में बहुत ज़्यादा रहता है, तो बच्चे इंटरेस्टेड है इस चीज़ में और आगे आई थिंक इस चीज़ से वो नॉलेज भी गेन करेंगे जिस हिसाब से आपने मैक्रोसाइकिल के बारे में बताया है। पहले हमने पैरासीटामोल के बारे में डिस्कस किया था। तो डॉक्टर साहब बच्चों को एक बात बताओ कि अगर ये लैब में काम करे, जैसे अभी तो थ्योरेटिकल वर्क भी होता है, तो लैब में काम करने के लिए इनको कितना डेडिकेशन चाहिए होता है लैब में इनको काम करने के लिए, किसी भी टारगेट तक पहुंचने के लिए? As undergrads like बी फार्मा स्टूडेंट्स, अगर हम जनरली बात करें कि बी फार्मा में लाइक जैसे बता रहे हैं आप, ये स्टूडेंट्स अभी इन लाइक 4th ईयर में हैं, और in future like some people go to different pharmaceutical industries. Like in pharmaceutical industries, like there are different departments, like there are some like a synthesis department which is dedicated for the synthesis of a target molecule, which is the whole process is fixed. Like they don't even like a whole process like a synthesis of a molecule in a one step, so everything is fixed. They didn't vary any parameter from the whole of the process. So in that case, so they have to do nothing like a common man. They have to take one chemical, take another chemical, then mix according to the company patented method, and they have to do nothing else from the method. If some people are interested in some R&D, like starting from from hit to a drug candidate, so for that it take a lot of time. If we are talking about the for a development of a drug, take around 15 to 20 years. It take around 15 to 20 years to be reached to the market from a laboratory. So if some people are willing to work on development of new drugs, like they have to they have to firstly design the synthetic methods. And so like there are some in current time there are so much tools like some docking tools. We can fix our target, like we have a target protein, target enzyme, and we can develop or like from based upon some literature, we can propose some new molecules, then check its winding, like how much it bind to the target. If winding is very good, like its winding is very strong based upon some hydrogen bonding or any other bonding, so they can synthesize that molecule, then optimize. So it take a time, but it's not a tedious job, but it requires some time, like 3 to 4 years, minimum 3 to 4 years for to obtain a good drug candidate from a hit or from a starting initially from zero. If we are talking about, we are developing a simple drug candidate, but that is only a drug candidate. That doesn't go to some clinical trial, but we just propose a single molecule. For they take around 3 to 4 years independently. Means you are dedicated on a one project. If you have multiple projects, in that case, it take little bit more time. थैंक यू। अभी बच्चे जिस तरह से इंडिया में है, तो काफ़ी बच्चे मतलब इनकी पोजीशन ये रहती है कि बाहर कंट्री में आना चाहते हैं, बाहर जैसे यूएसए, कनाडा पॉपुलर कंट्री है, तो ये चाहते हैं कि हम लोग आफ्टर बी फार्मा आए। तो क्या आफ्टर बी फार्मा पीएचडी इनके लिए क्या स्कोप है वहाँ पे, एम फॉर्म के बाद क्या स्कोप है? अगर बात करें, अगर मैं यूएस की बात करता हूँ, तो देर इज ह्यूज डिमांड ऑफ दिस फार्मासिस्ट बिकॉज दिस कंट्री लैक्स अ लॉट ऑफ like job opportunity for a pharmacist is very high. And if we are talking about the salary of a pharmacist is very high. It is equivalent to the salary of a doctor in US. So there is a huge demand of pharmacist. Pharmacist comes under a wide post job here. Like a pharmacist can make, if we are talking about in Indian currency, in US, to a starting salary of a pharmacist approaches to 1.5 lakh USD per annum. It is a starting salary. Like if we are talking in like a package of 1 crore, around 1 crore INR for per annum. So pharmacist is a good opportunity to work here as compared to back in India. Like India is a very populated country, so due to large population, so job opportunities are very less, and we know that the cost of drug is very low in India. But here the cost of drug molecules are very high. Like there are some parameters, the purity of that drug molecule is like very high as compared to back in India.
Like in India, we are talking about like a industry which is working on synthesis of drug molecules. So the best batch goes to US. Then if the purity of that, they like take an example. Our industry is working on synthesis of molecule, like a good molecule. Let's take an example of an antiviral drug. So if its purity is very high, then it directly goes to US market, then European market. If its purity is equivalent to our FSI, there are some limitation of our SSI. The purity of synthesis compound is a little bit compromised, and it's okay for for Indian population. So like its purity is around 95%, so they can subject that compounds or that drug to Indian market. If its purity is much lesser, like 60%, 70%, 80%, then this industry doesn't decompose that whole batch, but they subject that whole batch to some African countries, so they can easily sustain. The cost of drugs or pharmaceutical molecules is lesser in Africa, followed by there is a okay price of pharmaceutical drugs in India, and in US or Europe it's very high. ओके, और बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से आप इंडिया और यूएसए को किस तरह से कंपेयर करोगे? क्या इंडिया में ज़्यादा स्कोप है या यूएसए में आके कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है? अगर हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बात करते हैं कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अगर बिजनेस कर रहे हैं आपको, सो उसके लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है. लाइक द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज वेरी हाई इन इंडिया. लेकिन वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट वो कम है, ठीक है. बट जैसे कॉस्ट ऑफ सिंथेसिस भी कम है, लेकिन आपकी जो उसकी कमर्शियल कॉस्ट है उसकी बेचने की बिकती है ड्रग, वो भी कम है. लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो आपको, अगर हम नॉर्मल बात करें, प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई, बट इट्स कमर्शियल कॉस्ट इज आल्सो वेरी हाई. So for a business purpose, if you work on establishing some good industry in India and producing some good medicine or good pharmaceutical active molecules, and then subjected that molecules to European market as well as in US market, that will become a good business. Like it's like the margin is more than 25%. Like if we are going to buy like a simple drug like paracetamol, then in India it costs around, for 10 tablets it costs around 10 rupees, 20 rupees, more than more if you are talking like more if like 50 rupees. But here the cost of that paracetamol around 10 to $20, it around like 1000 rupees for 10 tablets. So it's very high here, so it's a good market. ठीक है, अभी थोड़ा हम पर्सनल लाइफ में आते हैं आपकी. तो जैसे मतलब आपका यहाँ पे रहना सहना, यहाँ का खाना, यहाँ का रेंट, मतलब इतना सारा, जैसे यहाँ के बच्चे यूएसए में आए, ठीक है, तो अगर इन बच्चों का पैकेज कम से कम 1 करोड़ या 50 लाख का नहीं होगा, तो क्या ये मतलब उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं अगर बिलो 50 लाख ग्रीन का हो तो? अगर बात करें नॉर्मली, अगर आपका पैकेज यहाँ पे 50,000 USD पर एनम है, लाइक अराउंड 40 lakhs इंडियन करेंसी की बात करें तो 40 lakh per annum, so that is okay, like it's good for a single person. If you have a family, like you have some dependent, so in that case you have to so the 50,000 is not good salary, so that if your package is around 1 lakh USD per annum, that is good for a family of 2 people. If you have a large family, then you need much more money, like insurance cost, living cost, as well as like apartment cost is very high as compared to our India. थैंक यू डॉक्टर साहब. अभी मैं बच्चों को पूछना चाहता हूँ, अब तुम्हारा कोई क्वेश्चन है यूएसए से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं. आओ आगे आओ. चलो बैठ जाओ या नहीं बैठ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर, अगर हमें कनाडा अप्रोच करना हो तो कैसे जाए? देखो, like you are from a pharmacy background, like you are approaching, you can easily approach like Canada or another
this European Canada, as well as some different another North American countries, as well as European countries. For that, the first thing that you have to qualify some language proficiency test like IELTS, TOEFL, or some another language test, and like just undergrad, you are just passing your undergrads like your B Pharma. So the best thing. हेलो डॉक्टर साहब, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है यूएसए में, और क्योंकि I think नेटवर्क अच्छा the आ रहा है। problem is with yes, हाँ, I Rohit think। network. चलो ठीक है, Can मैं I- जैसे डॉक्टर Can साहब ने रुक जाओ, मैं आंसर कर देता हूँ। रुक जाओ, बैठ जाओ लड़के। अच्छा चलो कोई ना, बच्चों का यही क्वेश्चन था कि हम मतलब कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो शायद डॉक्टर साहब दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो लास्ट में मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जैसे आपसे कांटेक्ट करना हो, जैसे आप ही हो। अच्छा डॉक्टर साहब चले गए। बाकी यहाँ पे जो 4 साइंटिस्ट हैं, इनसे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो जो इनका सोशल मीडिया का प्रोफाइल है रिसर्च गेट, तो तुम यूज़ करते होंगे या कोई नहीं करता होगा। लिंक्डइन है, फेसबुक है, तो उस पे आप लोग इनसे मतलब ज्वाइन कर सकते हो इनको, ठीक है, ताकि तुम्हारा लिंक रहे, ये क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से है, तो तुम लोग इनको वहाँ से लिंक कर सकते हो। तो Sorry for interruption. Yeah, there is some call, some like there's some FaceTime call on the laptop on the same time. So due to that, its call is just disconnected. Sorry for interruption. कोई ना डॉक्टर So साहब। we can discuss this later these topics like in another session. You can organize another meeting like just how to what to do after B Pharma or something like that. Yeah. Yeah. Any question? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका टाइम हमने लिया, ज़्यादा बढ़ा Okay, दिया। thank you very much. Thank you very much, Dr. Ram, for inviting us and giving such a beautiful opportunity to discuss something about synthetic chemistry and its importance in pharmaceutical companies. Yes, Yeah, sir. thank you. And we feel proud on you, like being an Indian. So thank you. अब मैं Okay, इनवाइट thank you. करूँगा, Thank you very much. अब इनवाइट करूँगा डॉक्टर, अब मैं इनवाइट करूँगा डॉक्टर राकेश राणा, जो कि पोलैंड से हैं। तो वो अभी अपना व्यू देंगे टॉपिक पे, तो प्लीज ज्वाइन इनको। तो डॉक्टर राकेश कुमार, प्लीज प्रोसीड। Thank you, Dr. Ram. एक ले लो ना, ले लो, किसकी है, किसी का मोबाइल हो। Can you see my slides? Hello, everyone. यस सर, बिजी। Okay, can you see? So first of all, thank you, Dr. Ram, for inviting me to give a lecture in your conference that is on the future of the pharmacist opportunity and challenges. So I am going to discuss about the characterization of these active pharmaceutical ingredients. So already
you hear here two presentations. In the first presentation, Dr. Rahul Upadhyay told you about the synthesis of the drug molecules, how we can synthesize those drug molecules in multi-step or in limited steps to reduce the cost of that molecules. And after that, Dr. Rohit Rana also explain a full journey of that drug, that active pharmaceutical ingredient, that chemical compound from laboratory to market. It's a long process. He explained in very detailed. So I just want to make this presentation not too much hectic. So I just try to make this like a story so that you, at the end of the presentation, you guys learn something new. So let's start. How we these are the about the spectroscopic techniques. Let's exploring the invisible world. So today I'm talking about the mainly three spectroscopic techniques, although there are a number of spectroscopic techniques which are used to analyze these chemical structure of the molecule. So it is first one is the UV visible spectroscopy. The second one is the infrared spectroscopy. And the third one is the nuclear magnetic resonance spectroscopy. So why we call these all techniques spectroscopy? In all these techniques, we used the electromagnetic wave which interact with the molecule, and we got some response by that molecule which is recorded, and we got some spectra, some signals, and we observe those signals and we identify the chemical structure, actual structure of the molecule. So now let's start with the very basic thing. So now you can see on the screen there is nothing, but there is something. So the same story is with these photon particles. Photons are the elementary particles. Elementary particles means the fundamental units. Fundamental units, those things whose we can't know about those. Like we don't know about the mass, and we can't even see, and we don't know about the existence of these type of molecules. That is elementary particle. We don't know from which these are made of. So we call those type of particles as the elementary particle, the smallest thing. So these elementary particles are joined together and form the electromagnetic radiations. So these can be considered as point-like particles, but we can't measure their size, their mass. We can't even see these photon particles. So what is the electromagnetic wave? So if these photon particles travel, like we know that light is traveling, so these photon particles travel like this, in this, 1 second, in this form. So these electromagnetic waves consist of the electric field. So this electric field, when interact with some matter, it can produce some signals, and it also consists with this magnetic field. And these two electric and magnetic field are perpendicular to each other, and also they are perpendicular to the direction of this electromagnetic wave. So here you can see this electromagnetic spectrum. So these electromagnetic waves can be divided into the different waves. So first, here is the gamma rays. So these are waves with very high energy waves and having very low wavelength. So what is wavelength? So wavelength is just like when we throw a stone in a pond, then you can see the waves of the waters. So similarly, these photon particles behave like particle as well as wave. When they behave like a wave, so there is a wavelength.
And if we see this gamma rays, the gamma rays are with very high energy and their wavelength size is equivalent to the size of the atomic nucleus. And these gamma rays are used in the treatment of cancer cells, and these are produced by the radioactive elements like uranium and plutonium. So next is the X-rays. So here the wavelength size is increases. So it's almost around the size of the atoms, and we used these X-rays to record our body X-ray. So next is the ultraviolet radiations. So the main source of the ultraviolet radiation, that natural source, is sun. So here you can see the wavelength size is increases and it is equivalent to almost a molecule size. And next is the visible light. So this is the only reason which we can see by our eyes of the electromagnetic spectrum. The other waves we can't see. And next is the infrared waves. Infrared waves sorry for the disturbance. So infrared radiations are used in our TV remotes. So you all people use TV remotes. So infrared radiations are used here. So here you can see this, the infrared radiations wavelength size is increases. It's like some object size. And further is the microwaves. Microwaves are used in your telephones and as well as in your cooking microwaves. And the final is the radio waves. Radio waves are used in TV and in FMs. So the question is that how we can use these electromagnetic waves to characterize the structure of our molecule. So this is the visible light which we can see by our naked eyes. The other electromagnetic waves we can't see. So next is the characterization of pharmaceutical ingredients. So here we can see this. You are very well aware about this paracetamol drug molecule. So how we can know actually the chemical structure is look like this. So we know that this is the atom. Here in center there is nucleus and electrons are revolving around it. So first is the UV-Vis spectroscopy technique. So in this technique we used the UV and visible region light, electromagnetic waves, and these waves are interact with these atoms, and here are some energy levels. When we use the UV radiation on this atom, it will absorb the energy and this electron will jump to the higher energy level. So here you can consider, here is the electron initially. When it absorbs the UV light, it will jump to the higher energy level, and there is one absorption band which we will observe on our screen. So the next one is the infrared radiations. So these are the energy gap between the electronic levels is more because UV radiations are more energetic and infrared radiations are less energetic. So they in the molecule there are another energy levels. Those are the vibrational levels. In vibrational levels, the energy gap is less as compared to the electronic energy levels. So in vibrational levels, we need less energy to excite these molecules in their vibrational levels. So in that case, we're using the infrared radiations. So infrared radiations, what they cause? They cause the stretching as well as bending of this molecule. And the final one is the radio waves. So inside this nucleus, there are again the energy levels of nucleus, like the electronic energy levels for electrons. So there similarly inside the nucleus, there are neutrons and protons, which are also situated on the energy levels. So in the nucleus, there are also the energy levels. So these energy levels look like this one. And when you use the radio waves, because the energy difference between these energy levels is very, very small. So we need very small energy
radiation. So in this case, we use the radio waves, and they absorb the radio waves and going into the excited states, and we observe the signal. So first is the UV visible spectroscopy technique. So like if we measure the UV spectrum of this paracetamol molecule, so we will observe this type of spectrum. So the good part of this technique is that whenever you will measure this experiment again and again at different position, you will get the similar result for this similar molecule. So this is the character of this molecule under this spectroscopic technique. So we can characterize that if we observe this lambda max at 243 nanometer, this is corresponding to this molecule. So this is the characteristic of this molecule. So how it look like? So here you can see this UV cuvette. So we need to dissolve this compound in a particular solvent in which it should be soluble. And then you can see this UV radiation passing through this solution. And when it will pass through this solution, the sum of the UV light will be absorbed by this molecule, and they are going to the excited state. When they absorb this UV light, we will observe this absorption signal. So in case of paracetamol, this absorption signal is at 243. So this is the way we record and we observe the spectrum. So next is the infrared spectroscopy. So here is the again a spectrum. This is the transmission spectrum. So here again, this spectroscopy is mainly used for the identification of the functional groups inside our molecules. So the beautiful thing about this technique is that in this molecule, you can see this carbon-oxygen double bond. So if we want to stretch this carbon-oxygen double bond, then we will observe a signal at 1649. So this signal will be repeated again and again when you will record this IR spectrum. So this is the again a characteristic of this particular functional group, which can be identified by this infrared spectroscopy. So here if we want to stretch something, we need to apply more energy as compared to if we want to bend something, because bending is easy as compared to stretching. So the reason is this spectrum is measured with respect to the intensity and the wave number. Wave number is centimeter inverse. So with the increase in the wave number, the energy also increases. So here for this OH, we observed a signal at 3300, around 3300. So this is the stretching band. And here in this region, you can see number of signals. So this is the bending vibrations. So this region is called the fingerprint region, from 800 to 400 to almost about 1200 or 1400. And the higher region is the stretching vibrations region. Similarly for NH functional group, you will observe signal at 3000 centimeter inverse. So by observing these signals of any molecule which contains this carbonyl, this NH group or this OH group, you will observe the signal in this range with somewhat plus minus 50 or 30 centimeter inverse of value. So we can identify the functional group by using this infrared spectroscopy technique. And the final is the nuclear magnetic resonance spectroscopy. So its name is nuclear. That means it deals with the nucleus inside the core. And magnet, we need to apply external magnetic field because the energy difference between the energy level of nuclear energy level is very small. It's too small that even at room temperature there is some energy. At room temperature there is some energy, so that energy may excite those molecules from ground state to excited state by thermal energy only. So by applying these strong magnets, we increase the energy gap between the spin levels. So here is this enema tube. So here we dissolve the sample of our compound in particular solvent, and this enema tube is used. And here is the
instrument of NMR, the inside, how it works. So we insert the NMR tube from here and it will go down here, and here is the coil. This coil produces the radio waves, and there is another coil which recording these radio waves. And these radio waves interact with our molecule, and there is some excitation, and we observe the signals which are recorded on the computer screen. And what we can observe from NMR. So in NMR, we are dealing with the nucleus. So here in these molecules, you can see this carbon having particular nucleus, this proton having different nucleus, and this oxygen having their own nucleus, and this nitrogen have their own nucleus. So we can, by adjusting the radio waves, we can only disturb particular nucleus, so that only particular nucleus can interact with the radio waves and produce some signals. So here is the proton NMR. So in proton NMR, we use that frequency of radio waves which only interact with these hydrogens. So we can identify the hydrogens. So we will observe signals only for hydrogens in proton NMR. So here is 1H NMR. So here we used solvent dimethyl sulfoxide D6. So here we need to use deuterated solvent, because if we used protonic solvent, then the protons from this solvent will also show signals. Those signals may have very high intensity, because solvent is always in excess quantity as compared to the compound, because very 1 mg or 2 mg compound we dissolved in this around 600 microliter of solvent. So that's why we need to replace this proton with D, so that D cannot interfere the signals, because deuterium will not interact, only proton will interact. So you will see this beautiful spectrum. So here are some sharp signals: 1, 2, 3, 4, 5. So if you see these three hydrogens, if the three hydrogens having the same environment, same electronic environment, because this carbon carbon single bond is rotating at thermal energy very fast. So these three protons behaving like a single proton. So you will observe only a single signal. So here is this signal is corresponding to these three protons. So we can identify there are three protons. So there is a methyl group in the molecule. Similarly, you can see this proton and this proton also having the similar environment. That's why these two protons will appear at a single signal at 7.3. Similarly, this proton and this proton are also similar environment. That's why they will give only one signal. And this NH is giving only one signal at around 9.6, and this OH will also give separate signals. So from this NMR spectroscopy technique, we can identify the number of protons by measuring the one proton NMR experiment in our compound. So similarly, we can measure the carbon 13 NMR. So from carbon 13 NMR, we will again observe some signals. So these signals, again, the characteristic of the number of carbons. The number of carbons, you will observe signal for each carbon. And in this experiment, you will not observe signal for the other nucleus like protons, nitrogen, and oxygen. So the beautiful thing about this spectroscopic technique is that these are like the permanent library for each molecule. So this, if we took this molecule and measure the NMR, proton NMR or 13C NMR, you will every time observe the same kind of signals. So we can identify the molecule, that our molecule is having this type of structure by using these three spectroscopic techniques. So this is how NMR instrument look like. This is the most expensive instrument in the synthetic laboratories. So without this, we can't do the characterization part. Specifically, we can't identify the molecule. So this is like the heart of the organic chemistry. But if we can grow crystals, we have the another technique by diffracting those crystals, we can even see the whole picture of this molecule. But the problem with crystallization is that we can't grow crystal for every molecule, because there are some molecules which are in liquid state.
So for liquid state molecules, it's very difficult to grow crystals. So this slide I just added for how these electromagnetic waves can be further used for in this research part. So you all knows in few months, I think in last year, this BEPS instrument is installed in the space. So how it works, how electromagnetic waves, how we can generate information from this instrument. So let's suppose this is one star. So it produces some light. So the beautiful part of this light is that it always carries some information with this, with the light, because let's suppose this light is passing through some molecule like carbon dioxide or water, and then it traveling, and we collecting this light and observing this light. So here we particularly designed this web to record the infrared radiations. So in infrared radiations, we already know if the molecule having some carbon, then it will show such type of pattern. And if the molecule containing nitrogen, then it will show such type of pattern in infrared spectrum. And if it is having oxygen, then it should show this pattern. If it has iron, then it should show this pattern. So we recorded the IR spectrum from this distant light, and by recording this IR spectrum, we have this spectras already. We matched these data with this library. If let's suppose from this star we observed carbon, and maybe from another star we observed iron. So that's how this Webb telescope is working. Thank you. Thank you, Dr. Saab. It is highly informative for us. Any question? हाँ. इधर आओ. Good morning, sir. Good morning, sir. Loudly बोलो, मेरे को नहीं. Good morning, sir. Good morning. सर मैं कह रहा हूँ सर, जिसकी ऑर्बिटल कंप्लीट होगी उसके लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं? जिसकी ऑर्बिट कंप्लीट है, जिसकी और एनएमआर एक्टिव होने के लिए जो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो जो हमारे ओड होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए. अगर इवन होंगे, क्योंकि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें पेयर अप होके वो सेट होते हैं. तो अगर वो पेयर अप होंगे, जैसे मान लो कि कार्बन है हमारे पास, जो हमारे पास नेचुरल कार्बन है, उसमें जो हमारे पास आइसोटोप होते हैं. अब आइसोटोप अगर तुम्हें पता हो तो आइसोटोप में क्या डिफरेंस होता है? सेम उसका न्यूक्लियस होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बट डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन्स में. तो जैसे कार्बन C12 फॉर्म में 99% होता है. इन्वायरमेंट में जो कार्बन है 99% वो C12 आइसोटोप है. बट एक 1% जो है वो अराउंड 1% जो है वो C13 है. जो C13 है, हम सिर्फ उसी को ही एनएमआर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज उसमें ओड नंबर आ गया ना. तो ओड नंबर वाले न्यूक्लियस ही एनएमआर एक्टिव होते हैं. अगर इवन नंबर है वो पेयर अप हो जाएगा तो वो एनएमआर में इनएक्टिव हो जाएगा, तो वो सिग्नल नहीं देगा. ठीक है सर. और एक सर जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सर जैसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, तो सर उसके अंदर तो मतलब अपने को बॉन्ड का पता लगेगा ना, भी कितने बॉन्ड हैं, लेकिन एटम का कैसे पता लगाएंगे उसमें? क्योंकि बॉन्ड का पता नहीं चलेगा उससे. उसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारा मॉलिक्यूल है, उसमें जैसे मान लो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग होती है, ऐसे फिर वो मूव करता है. जब उसने एब्जॉर्ब कर ली तब तो कुछ नहीं है, बट वो जब रिलीज करता है तो उसको हीट की फॉर्म में रिलीज करता है. जब वो एक्साइटेड स्टेट में ऐसे स्ट्रेच हो गया तो उसको अपनी स्टेबल फॉर्म में आना है. हर कोई बंदा स्टेबल रहना चाहता है. उसने जैसे लाइट एब्जॉर्ब की, वो ऐसे स्ट्रेच हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, कार्बन सेंटर में, 2 ऑक्सीजन है, पर वो जब बैक आता है तो वो
जो एनर्जी वो जो उसने एब्जॉर्ब की थी फोटोन से, उसको जब वो रिलीज करता है वो हीट की फॉर्म में रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमें गर्मी होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी धरती पे तो गर्मी ही नहीं होगी, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आपकी तरफ से हम लास्ट में क्वेश्चन लास्ट में करें, आप भी करोगे आप क्वेश्चन आपका और थैंक यू डॉक्टर साहब। है तो बस 2-3 मिनट क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे। आप नियर बाय यूक्रेन हो, आप पोलैंड यूक्रेन के पास ही है ना? तो हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन और जो दूसरी कंट्री है जैसे यूएसए है, कनाडा है, इससे आप कितने डिस्टेंस में और मतलब कितना वहाँ से अगर बच्चे पोलैंड में, अगर यूएसए जर्मनी इन कंट्री को छोड़ के ना अगर पोलैंड में आना चाहे तो कितना बेटर है और कितना इनके लिए आना वहाँ ईजी है? यूरोप यूरोप का क्या है कि अगर आप यूरोप में आना चाहो तो यहाँ पे शेंजन वीजा लगता है। तो अच्छी बात यह है कि तुम अगर घूमने आना चाहते हो तो तुम किसी एक कंट्री का वीजा लेके ऑल अराउंड 30 कंट्री में घूम सकते हो। बट अगर तुम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आना जा रहे हो तो तुम जिस कंट्री में जॉब करने के लिए आ रहे हो उस कंट्री का वीजा लेके तुम वहां पे जॉब कर सकते हो, बट तुम घूम अदर कंट्रीज में सकते हो, बट जॉब तुम सिर्फ उसी कंट्री में कर सकते हो फिर। सो यूरोप में इस तरीके से सिस्टम है। और यहाँ से जो कनाडा है वो अलग कॉन्टिनेंट है तो काफ़ी दूर है, और यूएस भी काफ़ी दूर है, जस्ट लाइक इंडिया यहाँ से काफ़ी दूर है। ओके तो बाकी यहाँ का जो लिविंग स्टाइल है वो इंडिया के कंपेयर करें तो कैसा है? लिविंग स्टाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, डिफरेंट भी है और कॉस्टली भी है। और इंडिया में तो मतलब मैं अगर कंपेयर करूंगा तो इंडिया में जो मतलब हमारे इंडियंस लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो लोग हैं थोड़ा सिस्टम में रहते हैं, जस्ट लाइक रोबोट्स। मतलब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही कहना चाहते हो? बट यहाँ के जो लोग हैं वो दे आर वेरी होनेस्ट टुवार्ड्स देयर गवर्नमेंट। और हमारे को पता ही है अपने इंडिया में हम मतलब ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, फ्रीली रह सकते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पे। तो जो बच्चे अभी बी फार्मा कर रहे हैं उनके आगे के लिए मतलब रिसर्च में मतलब थोड़ा सा 1-2 मिनट का व्यू बताइए कि आगे वो रिसर्च में क्या कर सकते हैं, बी फार्मा जो बी फाइनल ईयर। फार्मा बी फार्मा स्टूडेंट्स अगर कोई सच में रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो मैं उसको बोलूँगा कि वो एम फार्मा करे या उसके बाद पीएचडी में जाए। सो पीएचडी में एज पर योर इंटरेस्ट you can go in the synthetic chemistry lab, in natural chemistry lab, in medicinal chemistry labs, and you can work, you can do your PhD. And after doing your PhD there are a number of opportunities. You can go for the postdoc, not only in Europe, you can go in anywhere, in Canada, in US. So all of my friends are like this. I'm in Europe, my friends are some friends in USA, some are in Canada. So डॉक्टर साहब but ठीक है it's not always easy to do PhD. So if you really want to do research, then I will suggest to go for PhD. Otherwise, I will suggest to go for some jobs या after doing your B Pharma or M Pharma. डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब अब हम आपका भी चाहेंगे कि बच्चे को अगर फ्यूचर में किसी तरह का कोई आना हो, कुछ बच्चे बोलना चाह रहे थे कि हम डॉक्टर साहब से कैसे इंटरेक्ट करें, जैसे हमारे 3-4 डॉक्टर और भी है, तो मैंने इनको लिंक्डइन वगैरह आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल है वो मैं शेयर करूँगा। तो कुछ बच्चे जो रियल में रिसर्च में जाना चाहते हैं, थोड़े इनोवेटिव आना चाहते हैं आगे, तो मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में भी आप उनकी हेल्प करें। आप थोड़ा बिल्कुल इतना बिल्कुल कर, मैं ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। thank you for the invitation. ठीक है, थैंक यू। अभी अभी हमारे सामने हमने एक इनवाइटेड स्पीकर है, डॉक्टर बबीता मैडम हैं, जो कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्सास यूएसए से हैं। वो हमें इंटरेक्ट करेंगे, अभी आ रहे हैं। अभी मतलब हमने उनको रिक्वेस्ट की तो मतलब हमें थोड़ी टाइम के लिए वो टाइम देंगे, तो आप डॉक्टर बबीता मैडम से इंटरेक्शन कर सकते हो। इनके बारे में बता देता हूँ, ये IIS RE और INST जो मोहाली है वहाँ से उन्होंने
मतलब पीएचडी की हुई है और कैंसर में इन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। यानी कैंसर के अंदर जो कैंसर आपको पता है कितनी लाइलाज बीमारी है, उसमें मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो गुड मॉर्निंग मैडम, वेलकम मैडम। आप हाँ, Good morning, everyone. So, my name is Babita, and already Dr. Ram have introduced me. Thank you so much, Dr. Ram, for giving me the opportunity to introduce myself. So, I have done my PhD from ISER and INST Mohali. So, basically, I am working on the cancer biology, and basically, my work is based upon the epigenetic regulations. So you all are aware about the cancer, which is directly and indirectly affecting us. And it is the dark side of like for everyone, because we are not able to find the solution and even treatment in for the cancer. So there is so many causes which will like because of that cancer is happened. Like we can, some people are saying there is environmental changes, some are saying they are genetically level, and some, so there is so many factors. It is heterogeneous disease. Because of that thing we are not able to treat it. So I am working on the epigenetic changes. So epigenetic changes are the changes which is not affecting the DNA sequence, but because of the addition of any groups like methyl group, acetyl group, the their function is changed. And like this is very deep. If I am going to explain everything, you people will get confused. So like right now I am working in the MD Anderson Cancer Institute in the USA. So I will like tell more if someone is interested to know about this cancer. So right now, like if anyone have any query regarding this, I can explain. And you can ask anything if you have any query regarding cancer. फर्स्टली हम स्टूडेंट से लेते हैं। सर कौन सी कंट्री से हैं? मैडम टेक्सास या यूएसए से। तो क्वेश्चन है कैंसर से रिलेटेड हम लोग ऑस्ट्रेलिया है क्वेश्चन है। मैडम बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन। तो मैडम जी जी मैम। तो मैम आप जो कैंसर सेल पे काम करते हो, कैंसर पर्टिकुलर सेल्स पे काम करते हो या फिर जो ब्लड कैंसर वगैरह इस पे काम करते हो? My PhD is basically on blood cancer, acute myeloid leukemia. So like I already work on the acute myeloid leukemia. I have done my PhD on it. So we know in the acute myeloid leukemia there is the abnormal proliferation of white blood cells. I can explain in Hindi also. I know Hindi, so it is easy to everyone understand the thing. So blood cancer ऐसा कैंसर है जिसमें कि हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है, जिसकी वजह से अगर इसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाए तो हम इस डिजीज को क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हर बॉडी के पार्ट में ब्लड जाता है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम इसको कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं, बहुत सारी थेरेपीज देते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट कैन रिकवर फ्रॉम इट। सो इसीलिए पीपल आर वर्किंग ऑन इट ऑन द जीनोमिक लेवल and try to find the solution, and they are find the hit drugs which are particular targeting a gene. Because अगर हम बेसिक बायोलॉजी की बात करें तो सिंपल एक सेंट्रल डोगमा है जिसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, देन डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन आफ्टर दैट ट्रांसलेशन व्हिच इज मेकिंग द प्रोटीन। अगर हम किसी भी चीज को इनहिबिट कर दें लाइक ट्रांसक्रिप्शन पे, तो इट इज इजी टू क्योर द थिंग्स, क्योंकि ट्रांसलेशन ही नहीं होगी, और जब ट्रांसलेशन नहीं होगी तो बॉडी जो प्रोटीन बनना है वो बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम इसको अब जेनेटिक लेवल पे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी मैम। मतलब केमिस्ट का रोल ये हो सकता है कि कुछ ऐसी ड्रग बनाए जो मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है वो इसको इनहिबिट करते हैं। यस जी।
तो मैम आपको कितना टाइम हो गया मैम यूएसए में काम करते हुए? 1 year. अच्छा I have completed my PhD last year only. आपने ज्वाइन किया है। तो मैम जैसे कुछ बच्चे हैं तो बी फॉर्म के बाद में क्या पॉसिबल है यूएसए आना रिसर्च लेवल पे? बी फार्मा के बाद आफ्टर बी फार्मा बच्चे क्या यूएसए आ सकते हैं क्या? वहाँ पे मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी है या फिर इनको हायर एजुकेशन इनको एक्चुअली मुझे लगता है कि देन इनको हायर एजुकेशन के लिए यूएस शिफ्ट करना पड़ेगा। जी। अगर ये डायरेक्ट जॉब के इसमें आएंगे तो आई थिंक बहुत मुश्किल होगी, इनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएंगी। पहले इनको आके यहाँ पे स्टडी के लिए आफ्टर पीएचडी ही एक ऐसा है कि जिसमें हमको वीजा इजीली मिलता है और आफ्टर पीएचडी हमको इजीली पोस्ट डॉक मिलती है, तो हमें वीजा में इशू नहीं आते हैं। पर अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन आना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है। जी मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू मैम, आपने अपना दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैडम। और कभी आइएगा तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा, इन सब के साथ आए तो कभी सिरसा आना और थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। तो अभी हमारा लास्ट लेक्चर रहता है जो कि मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर राहुल को, बस लास्ट लेक्चर है अपना। डॉक्टर राहुल आ जाए, उसके बाद में तो सॉरी डॉक्टर राहुल। Dr. Ram, maybe we can take a break of 10 minutes or 15 minutes. ओके, फिर डॉक्टर राहुल को लेते हैं हम। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। Yes. ठीक है, ओके। आप मैं इसको काट मैं लिंक को काट नहीं रहा, आप या तो इसको yes, it will be continue. It will continue. ठीक है। So I think we can meet after 15 minutes. 10 मिनट 10 बोलेंगे। 10 minutes, okay, it's okay. ठीक है डॉक्टर साहब। तुम्हारी जो क्वेरी है वो यहाँ पे नहीं करता है, ये ऑलरेडी हमने पूछा नहीं, अब तुमको क्या पता लगेगा कि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम लोग है ना, हम लोगों को बाहर से निकालेंगे आपका वहीं से ज़्यादा वहीं ना यूएस में है। अब जो सबसे बड़ी यूएस है और बाद में कनाडा है, रसिया है, इंग्लैंड है, ये है। बाकी तो क्या ऑस्ट्रेलिया, ये सब तो उनके गवर्नमेंट कंट्री है ना, ये इनमें ये जा नहीं रही। ऐसा नहीं है कि ये जा नहीं पाते, ये क्यों नहीं? क्योंकि यूएसए में किसी का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। आपका इंग्लैंड में मुश्किल है, ठीक है, और सारे जितने मेरे फ्रेंड है वहाँ यूएसए में, तो
यूएसए में बहुत डिफिकल्ट है, ऑस्ट्रेलिया में तो आप पूछ लो इनका आइए आपको ऑफर लेटर दिखाते थे, अभी भी इनको आता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाना डिफिकल्ट नहीं है, जो डिफिकल्ट है उसके लिए उधर से हो गया तो ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे दोस्त भी है, ठीक है। तो ये कंट्री सब जैसे मैडम थे उन्होंने कैंसर पे काम किया है, बहुत डिफिकल्ट काम तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं क्वेश्चन पूछने से घबराते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्यों नहीं है तुम्हारे, क्या भी तुम भाई हिंदी बोलो, मैं उनके साथ में ताकि तुम लोगों को समझ आए। इंग्लिश में बात नहीं करें। हाँ, इस चीज की नर्वसनेस है, अगर नर्वसनेस होगी तो समझ जाएगा। मैंने तो मैं पहली बार देखा, मुझे कोई नर्वस आपके साथ नहीं, मुझे तो नहीं आती ना, मुझे नहीं आ रही तो क्यों आ रही, को प्रेजेंट करना सीखो भाई, और स्टेज पे प्रेजेंट बड़े रेयर लोग आते हैं, बाकी तो लीडर ये थोड़ी ना लोगों को बोल दिया डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, तो आपने भी देख पाया देखो ना, मैं बात ये होती है कि जब तुम पीएचडी कर जाते हो ना तब तुम्हारी असली बोली लगती है, पहले जब ना बी फार्मा करके तुम फिर ऐसा नहीं है, वहाँ फार्मासिस्ट इन्होंने बोला ना जो कर सकते हो तुम, ठीक है, फार्मासिस्ट कर सकते हो, तो ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी है, जैसे हम बी फार्मेसी आ गए फार्मा वहाँ करने जाओगे तो कितना फीस है, कम से कम ये मान के चलिए एक साल की फीस होगी लगभग 60 लाख रुपए एक साल की, वहाँ डॉलर में, उसके बाद में तेरे अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए तो तू वहाँ जा सकता है, उसके बाद में तुझे घर रिजर्वेशन रखना चाहिए, घर वहाँ पे ऐसा नहीं है एक साल का तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, मतलब तुम्हारा वर्ड होना चाहिए, ऐसा फॉरेन में नहीं रह सकते, तुम भाग जाओ तुम्हारा पहले दबा के रखती हो, और ये गए हैं इनके साथ भी ऐसा ही बनेंगे, इनको जो भी रूल है रेगुलेशन गवर्नमेंट दे रही है, ये सिर्फ 1.5 लाख रुपए जो कि इनका कहाँ से लगा फ्लाइट का लगा, 15 दिन बाद में इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए चले गए, कोई तो खत्म ही नहीं होते, उससे पहले उनकी सैलरी आ जाती है, तो कहने का मतलब है कि इन्होंने हायर एजुकेशन गेन किया, हायर एजुकेशन गेन करने के बाद में इसको मैं ये नहीं कहता कि तुम भीड़ मारने के बाद में कुछ नहीं कर सकते, मैं ये कहता हूँ कि भीड़ से अलग होना है, पीएचडी लेवल पे अगर इनके लेवल तक जाना है इन्हें वही करनी चाहिए, ये वही उन्होंने बोला ना कि देखो अगर बी कॉम में जाएंगे तो बड़े सारे आपको हो सकता है करना पड़े, वो पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, लेकिन अगर तुम वहाँ पे जाओ बुला लेंगे वालों को बोली लगती है अब जो आ रहे हैं वो है डॉक्टर राहुल, वो इंडिया से ही है, आपके साथ थे वो जा रहा है बाहर, वो उसका वो देख रहा है इंग्लैंड से जाएगा यूएसए में जाएगा, मुझे टारगेट सर आप ही जाओ ठीक है, मैं ठीक है, तो लास्ट मैंने लूंगा, तो अभी देखो ना ये जो राहुल आ रहे हैं इनके बारे में बता देता हूँ, ये बेसिकली उन्होंने और इन्होंने बी कॉम की है, बी कॉम के बाद में 3 बार इन्होंने
तो यही है वो हाँ, 3 बार इन्होंने जीपेट क्वालिफाई किया है, 2 बार इन्होंने नाइट्रेट क्वालिफाई किया है। जीपेट के बाद में आपको नाइट्रेट देना पड़ता है, मतलब 3 बार इन्होंने जीपेट दिए, 3 बार जीपेट क्वालिफाई, उसके बाद में 2 बार नाइट्रेट दिया, 10 बार नाइट्रेट। ये ऐसी स्थिति है जो आपसे मतलब मिलेगी। और इससे आप जैसे फार्मेसी जो एमएस केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर एमएस है और एमएस कोई डिफरेंस नहीं, बस डिग्री थोड़ी सी सेम काम करने के लिए डिफरेंस है। एमएस जो है वो फार्मास्यूटिकल डिग्री से उनकी होती है, थोड़ा सा प्लस भी एमएस, हाँ एमएस होती है वो कहाँ होती है वैसे कोई ज्यादा नहीं। आगे सब लोग यहाँ हो ना, Dr. Ram. अच्छा I think we can resume the session. हाँ जी, We can resume the session. हाँ आगे सब लोग ना, आपकी आवाज थोड़ा वो गूंज रही है, इसमें तो प्रॉपरली सुन नहीं रही है मुझे। एक मिनट, हाँ रोहित सर, हेलो, हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है रोहित सर, अच्छा ठीक है। तो वेलकम अगेन। अब हम दूसरा सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो राकेश सर, मैं आपकी परमिशन चाहूंगा कि डॉक्टर राहुल तथास्तु कर दो शुरू। अच्छा, आप हमसे बड़े हो, सीनियर हो, आपका आशीर्वाद बना रहे हम पे। तो जो राहुल है वो दिखाई नहीं दिए, मतलब थोड़े से दिखाई दिए थे। कहीं वो लैब में तो नहीं बैठे, लाइब्रेरी में तो नहीं है डॉक्टर राहुल? अभी Dr. Ram, I think you need to talk with Dr. Rahul. या आई एम कनेक्टिंग जस्ट। आगे आगे राहुल, राहुल आगे, ठीक है, हाँ 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 ठीक है, मैं फोन कट कर रहा हूँ। ठीक है राहुल, तुम्हें ही इनवाइट कर रहा है, आ जा राहुल, आप म्यूट हो। डॉक्टर राहुल आप म्यूट हो। मुझे लग रहा है ये पालमपुर है और थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है पालमपुर। अच्छा ठीक है, हाँ डॉक्टर राहुल, हाँ आप म्यूट हो डॉक्टर राहुल, म्यूट हो आप। चलो मैं यहाँ से हो नहीं रहा, लग रहा है ये प्रॉब्लम में है थोड़ा। ये दोबारा ज्वाइन करेंगे। Dr. Rakesh.
I think you need to install a Wi-Fi connection over Palampur. वो मुझे ऐसा है ना, वो घर पे है, हमारे रूम पे है वो अभी क्वार्टर में, तो वहाँ पे इश्यू आता है। जियो का नेटवर्क है वहाँ पे, ये अभी लैब में नहीं है। Okay. हाँ। नहीं तो मैं इनको अभी कॉल है। हाँ डॉक्टर साहब, हेलो। अनम्यूट नहीं हो रहा है यार, अब तो ज्वाइन कर, अब यहीं से भी कोई ऑप्शन एग्जिट कह रहे करके हैं। दोबारा ज्वाइन कर ले। नहीं, तुम ज्वाइन करो ना, फिर मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें वो कर देता हूँ। तुम बोलो, फिर मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। हेलो यार, हेलो राहुल, हाँ, दोबारा से ज्वाइन करके देखो, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। हेलो ये ज्वाइन कर रहा है। तो डॉक्टर राकेश आपके सामने है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हो? ये वैल्यूएबल टाइम है, जो इस टाइम मिल रहे हैं वो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा जब तक वो रिजॉइन कर रहे हैं। इतने तक डॉक्टर राकेश से कोई क्वेश्चन कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी है, अच्छे बॉलर है ये, और पोलैंड में इनको क्रिकेट का मैच शायद नहीं मिल रहा है खेलने के लिए, ठीक है। और जो अपने रोहित सर थे वो भी काफ़ी क्रिकेट प्रेमी है, वो वहाँ पे कुछ डॉलर पे करके खेलते हैं, ठीक है। यानी इंडिया की तरह ऐसे नहीं है कि हर क्रिकेट के मैदान है, ठीक है। वो जाते हैं, मतलब उनका क्लब होता है ना, उसी में खेल सकते हैं। तो ये इनकी जो दिनचर्या है वो इस तरह से रहती है, मतलब इंडिया की तरह नहीं है कि तुम कहीं पे भी खेलिए। बात में कर लेंगे पोलैंड के बारे में, तो क्वेश्चन है तो कर लो। राकेश सर, टाइम कितना है वहाँ पे इस टाइम? अभी 8:30। ओके ओके, ये अब ठीक है। अभी भी आप म्यूट हो, रोहित राहुल कुमार, अभी भी आप म्यूट हो। अगर आप म्यूट हो तो आप एक काम करो ना, मतलब कॉल उस पे ज्वाइन कर लो। मैं कॉल कर लेता हूँ ना आपको, फोन पे कॉल कर लो और इस पे म्यूट ही रहने दो, और मैं शायद यहाँ से आपको अनम्यूट करने। राकेश सर, आपने लिंक शेयर किया है तो आप अनम्यूट करो, इनके आपके पास परमिशन होगी। इसका तो म्यूट करने की परमिशन आ रही है, पर अनम्यूट करने का नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ रोहित इनको। Like he's joining by some web or something. I think he didn't download this MS Team software in his laptop. Maybe that may create this problem. हाँ, लैपटॉप में प्रॉब्लम है। आप कॉल रिसीव करो डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ हेलो, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, अब आप ऑडिबल हो। अच्छा, आपका स्पीकर पे लगा हुआ है, बच्चे सुन रहे हैं, आप ऑडिबल हो। ओके। हाँ, आप ठीक है, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे। ठीक है, I will share my presentation. Visible? हाँ, नाउ विजिबल। ठीक है, नाउ कैरी ऑन।
Start? Yes, yes, yes. ठीक है, एस्पेक्ट्रेसो सही है। Just it. डॉक्टर साहब यहाँ विजिबल हो रही है स्लाइड। Start. हाँ, यस यस। Firstly, good afternoon to all of you. And thank you, Dr. Ram, to inviting me. Today I am presenting how to synthesis of ciprofloxacin heavy conjugates and what is opportunity in the field of pharmacy. First is introduction of ciprofloxacin. Everyone know what is ciprofloxacin. Ciprofloxacin is a broad-spectrum antibiotic of the fluoroquinolone class, which was patented in 1983. US FDA approved in 1987 for the treatment of urinary tract infections, skin-borne and joint infection, typhoid fever, gastrointestinal infections. Their parenteral forms show low solubility, least solubility, and low intestinal permeability, which is present effects by P-glycoprotein in the intestinal membrane. This antibiotic is more favorable pharmacophore modifications such as it retains its therapeutic activity, but enhance its overall viability, solubility, and permeability. And the adverse effect of ciprofloxacin is tendon ruptures, cardiac toxicity, headache, dizziness, and insomnia. And this is chemical structure of ciprofloxacin. The next is avibactam. What is avibactam? Avibactam is a first is a non-beta-lactam. Beta-lactamase inhibitors drug is developed by AstraZeneca. This drug is
affairs. Regulatory affairs. What is regulatory affairs? Regulatory affairs act as the interface between pharmaceutical industry and regulatory authorities across the world. And you can pharma quality analysis and assurance, pharma biotech. You can MBA from graduate pharma management, finance, marketing. And after GPAT qualified, you have other options. You go to the BITS planning at higher reputable institutes after NIPER. And in abroad, you have opportunities for MS. यदि आपने GRE क्वालिफाई किया तो आप USA के लिए आप जा सकते हैं आफ्टर मास्टर फॉर PhD. एंड आपको ट्रिपल क्वालिफाई करते हैं अगर तो USA और UK के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी है PhD करने के लिए. अगर आप IELTS क्वालिफाई करते हैं तो IELTS तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड में आप PhD के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी है आपको. प्रॉपर USA UK IELTS एंड अगर MBA अगर आप फार्मा से करते हैं तो आप कैपिटल से USA UK IELTS से USA कनाडा से आप कर सकते हैं. एंड PhD and postdoc research work आप कर सकते हैं various university organization work as a registered pharmacist in Middle East and Gulf countries. After B Pharma, you can go Middle East and Gulf countries, Dubai, Arab countries. Regulatory affairs, the international level पर कौन से ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स जो कंट्रोल करती हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US FDA एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. एंड इंडिया में जो एजेंसी कंट्रोल करती है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू डॉक्टर राहुल. तो मैं देखिए ये जिस तरह से आपको मैंने बताया कि अपने फार्मा से रिलेटेड है ना, तो फार्मेसी से आपको क्वेश्चन कीजिए इनसे GPAT से रिलेटेड, नाइपर से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की. हाँ तो आप कुछ पूछना चाहते हो उनसे पूछिए. सर एम फार्मा के बाद जो भी जॉब्स निकलती हैं मैक्सिमम कितना कमाते हैं इंडिया के अंदर? ये बोल रहे हैं कि एम फॉर्म के अंदर जो जॉब निकलती है उसमें मैक्सिमम इंडिया के अंदर कितना कमा सकते हैं, गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में बता दो आप. आफ्टर एम फार्मा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर में 20 से 25 हजार जैसे पहले इंडस्ट्री ये रियलिटी है. अगर आप जाते हो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट रिलेटेड फार्मासिस्ट, your salary started from 30,000 to 35,000 per month. आफ्टर बी फार्मा उन्होंने बताई ना काफी अपॉर्चुनिटी. डॉक्टर साहब आफ्टर बी फार्मा अपॉर्चुनिटी जैसे कि आपने बताई थी, लेकिन आप एक बार और बता दीजिए कि जॉब आपके पास ऑप्शन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आप एमआर की जॉब कर सकते हो. उसके बाद आप जीपैट की प्रिपरेशन कर सकते हो जिसमें आपको फेलोशिप मिलेगा 12,400 रुपये पर मंथ आपके फार्मा के साथ. आप इसमें आपको
फाइनेंस का सपोर्ट मिलेगा और आप उसमें आप अपनी मास्टरी को कंप्लीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने जैसे 3 बार जीपेट क्वालिफाई कर रखा है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने एक बार ही करना है, तो कोई इजी मेथड बताओ। उसके लिए मेथड कोई भी मेथड आपको है, कंसेप्चुअली आपको स्टडी करना पड़ेगा। जो आप अपनी क्लास में पढ़ते हो फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर, उनको आप कंसेप्चुअली पढ़ो। ओके, उसके बाद नोट्स बनाओ अच्छे से सेल्फ टू सेल्फ स्टडी के लिए। जितना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा इतना ही आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में इजी रहेगा। और आप कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कह रही है कि गर्ल्स है वो एमआर की जॉब नहीं कर सकती, लेकिन इससे कोई मिलती जुलती जॉब हो, अगर मान लो वो गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो गर्ल्स के लिए क्या जॉब बेस्ट रहेगा? बी फार्मा का जॉब भी करना है या स्टडी करना है? ये बी फार्मा के बाद में जॉब का पूछ रहे हैं। जॉब भी करना है। फार्मासिस्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स। और अगर ये बोल मोहम्मद अली और जैसी गुप्ता, आप बताओ भाई, आपने जीपेट में कौन सी बुक फॉलो की? कोई ऐसी बुक पढ़ी जो जिससे कि पीयूष मोहम्मद अली एंड ज्योति गुप्ता, पीयूष मोहम्मद अली एंड ज्योति गुप्ता। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? यार आके आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ ना, जो क्वेश्चन करना है पास आ जाओ, क्या प्रॉब्लम किसमें? QAC में मैक्सिमम में जो सैलरी मिलती है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस में मैक्सिमम सैलरी पूछ रहे हैं। आफ्टर बी फार्मा होती है, एम फार्मा बी फार्मा दोनों बताओ। 15 to 18,000 हाईएस्ट तो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा ना। आगे कोई? हेलो, अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा जीपेट क्लियर नहीं हो गया और हमें मतलब आना है, मतलब फॉरेन में आना है, तो कैसे आए? आपका जीपेट क्वालिफाइड है? हाँ, नहीं बिना विदाउट जीपेट क्वालिफाइड फॉरेन कैसे आए? एम फॉर्म भी नहीं है जी। आपको जीआरई क्वालिफाई करना पड़ेगा। कोई ना कोई ये टोटल कुछ ना कुछ क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं आपको स्लाइड भेज दूँ ना? हाँ हाँ, ये इसमें यूएसए अगर आपको जाना है तो जीआरई क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके जीआरई में कोचिंग सेंटर्स हैं, कुछ कोचिंग सेंटर जो आपको जीआरई कराते हैं, फैसिलिटी कराते हैं, लेक्चर कराते हैं। आप में से किसी एक को क्वालिफाई करके आप जो कंट्री में आपको जाना हो तो मास्टर के लिए, तो आप इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है वो यहाँ आके कीजिए, पीछे शोर मच रहा है। कोई क्वेश्चन है आप यहाँ आइए और पुट कीजिए। अभी हमारे जो फॉरेन में जो बैठे हैं सारे साइंटिस्ट वो भी अभी अवेलेबल है, आप किसी कर सकते हो सब लोग। अगर आप पीएचडी करते हो इंडिया से तो पीएचडी के बाद आपको जीआरई टोटल आईएलटीएस क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये मैं समझा दूंगा इनको। ठीक है, मतलब पीएचडी करने के बाद में आपको जरूरत नहीं होगी। जैसे ये सब डॉक्टर साहब गए हैं तो बेसिक तुम्हें डिमांड क्रिएट हो जाएगी तुम्हारी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, और बच्चों के लिए अच्छा, तो मैं अगर सब लोग हो तो एक बार प्लीज़ आप लोगों को इनवाइट करेंगे, और हम चाहते हैं कि एक कोलैबोरेशन में एक फ़ोटो भी हो जाए, आगे बच्चे आ जाएंगे
सब लोग साथ में, अगर अवेलेबल है डॉक्टर साहब तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, श्योर। तो पूरे स्क्रीन पे आ जाएं। राम सर सिर्फ 1 मिनट का टाइम दो। उपाध्याय बबीता मैडम, अगर सब लोग हैं तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अगर सो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अवेलेबल है तो। Around 3 a.m. right now. 2:53 a.m. right now here. हाँ जी, रोहित सर आ चुके हैं, उपाध्याय सर भी आ गए हैं, निशा मैडम भी आ गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब एक तो फोटो कोलैबोरेशन में बना लेते हैं। 8 सेम वाले आ जाओ पहले, 8 सेम के आ जाओ वहाँ पे, 8 सेम वाले, ओनली 8 सेम के, हाँ 8 सेम के बच्चे। या इस पे ये टूटेगा तो नहीं, टूट जाएगा क्या? चलो एक काम करो फिर, कैसे ले, या तो चेयर ले लो 2 मिनट के लिए, बस 2 जल्दी करो, इनको सोना भी होता है, लैब में जाना है। राकेश सर, डॉक्टर राकेश, why you are not smiling? like say paneer. I have to go to the lab. I am already late. Dr. Ram, tomorrow it's 3 a.m. here. This weekend is a long weekend. In this weekend. That's why you need to get a holiday on Monday. I don't have job. क्या एडजस्ट हो रहा है? We are not celebrity, just take a photo and go. ठीक है, ये दिख रहा है ना अपने, ठीक है। अब रिमेनिंग आ जाओ सारे, दो दिख रहे हैं, दो अब आवाज आ रही है? अच्छा, ओके। तोड़ दो, ठीक है, नया लैपटॉप लो, ठीक है। रोहित गिफ्ट करेगा, फिलहाल डॉक्टर राम को बोला जाए कि ब्रेकफास्ट गिफ्ट करे, इधर 3 बज गए हैं, सुबह 5 बजे उठना भी है। अरे यार, मैं भी ले सकता हूँ, पर यार बड़ी फोटो लूंगा तो मेरे कैमरे के साथ आ जाएगा। चलो छोड़ो, ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, सारे देखो। I'll show your teeth. Ram, डॉक्टर राम, smile प्लीज। अच्छा, सबकी फोटो आ गई है,
चलो Dr. Ram, ठीक है। हाँ जी, I think you have to manage some breakfast to me because it's 3 a.m. हम डॉलर में नहीं करते ना, डॉलर में बिजनेस नहीं करते, हम रुपयों में करते हैं। डॉलर में कमाओ पर खाना हम वही खाते जो तुम खाते हो। कोई ना मैडम, खाना मंगवा देंगे आपके लिए। डॉक्टर राम, मैंने इस पूरी कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तो इन फ्यूचर अगर किसी को कुछ फिर से देखना है तो वो देख सकता है। ये आप शेयर कर दीजिएगा, ये अच्छा किया। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम आपका बहुत धन्यवाद, रोहित सर बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि फ्यूचर में आप इसी तरह का एक कुछ प्रोग्राम भी देते रहे, ठीक है। बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो अगर बच्चे आपको फॉलो करें या कुछ करें तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो थोड़ा ब्राइट हो। हमारी तो यही है दुआ। चलो जी, धन्यवाद, आपने टाइम दिया। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। टेक केयर।